राइट. सो कॉम्बिनेशन die में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो. In this also, in this also, comma, in this also, more than one operation can be performed at one station. This is the common statement that you can write in all the answers, but not in simple die, because simple die may it is only one single operation at a single station. There cannot be combination. All right. So in this also, comma, more than one operations can be performed at one station. Next point, it differs from compound die in such a way that it differs from compound die. It differs from compound die in such a way that a cutting operation is combined. A cutting operation is combined with bending or drawing operation. A cutting operation is combined with bending or drawing operation. ऑलराइट. इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाई नाम इसीलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन के साथ नॉन कटिंग ऑपरेशन भी कंबाइन कर सकते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज टू कटिंग ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट डायमीटर, right, or two different operations based on cutting operation, that is blanking and punching for example. Here you can also use bending operation in combination with cutting operation, that is cutting and non cutting का combination हो सकता है. This is specifically known as combination die because combination में they what they want to tell you is that combination is not only cutting and cutting, it is cutting plus non-cutting also. That entire combination, that permutation combination is possible only in combination die. All right. The problem with this is not, I mean, the advantage, not the problem. The advantage with this is the length of the or the distance between two stations. That is, this station and this station is comparatively more as compared to this thing compound die and progressive die. All right. तो यहाँ पे वो जो distance है तो you have a flexibility to adjust your workpiece accordingly, and this will give you a free hand in creating a wonder in your this thing final object. अब इसके अंदर ये जो डाई का है सेक्शन, डाई का जो सेक्शन है इसमें आप देखेंगे कि देयर इज नो angular clearance provided. This is one of the very important aspect of this drawing. There is no angular clearance provided, but they have provided a spring adjustment system or a spring support system that is there in the die block. Now you can alter it according to your convenience, because like if there is a combination wherein you have to have something related to cutting operation and there has to be a blank that is to be developed. अगर ब्लैंक अभी कट होगा तो कुछ ना कुछ कटिंग मटेरियल तो निकलेगा, तो वो मटेरियल को ड्रॉप होने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन एंड एन एंगुलर क्लियरेंस प्रोवाइडेड. ऑलराइट. तो यहाँ पे ये दोनों सेक्शन में हम लोग ने स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, बट यहाँ पे यू कैन ऑल्टर. अभी यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ स्टिल पिक्चर, अ स्टैटिक इमेज, so there are restrictions in this, but in actual practice when we go on combination die or we work on combination die, there can be adjustment made according to your convenience. So basically देखा जाए तो this is a combination of cutting as well as non cutting operation. Alright. तो आप cutting के बाद bending करो या bending के बाद cutting करो, depending on the design and the object. Alright. तो आप वैसा combination कर सकते हो. This is one of the very important answer and one of the favorite answers of the examiner, wherein they will be asking you to explain or write short note on combination that, and they will be expecting this answer from you. Alright. Now हमने ये point लिखा, it differs from compound die in such a way that
comma, a cutting operation is combined with bending और drawing operation. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अब इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे हम. लाइक बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या, ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसका यूज क्या है, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तो बेसिकली कैसा क्या हमने जो बचपन में किए थे, 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, कहाँ पे हमको एक एक्सपेरिमेंट होता था या प्रैक्टिकल होता था. वी हैड टू हैव अ डायग्राम अपैरेटस, फिर हम लिखते थे अपैरेटस, फिर उसका यूज, फिर इसके प्रोसीजर, वो सारा का सारा हम यहाँ पे भी वैसे ही अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दैट वी विल बी हैविंग अ लुक एट इट. द डायरिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द डायरिंग कॉमा, द डायरिंग कॉमा which is mounted on the die shoe, the die ring which is mounted on the die shoe comma is counterboard, counterboard, the die ring comma which is mounted on the die shoe comma is counterboard at the bottom, is counterboard at the bottom to allow the flange of a pad, is counterboard at the bottom to allow the flange of a pad to travel up and down, to travel up and down. Next point. This pad is held with the face of the die by a spring. This pad is held with the face of the die. This pad is held with the face of the die by a spring. Next point. A drawing punch is of required shape. A drawing punch of required shape is attached to the die shoe. A drawing punch of required shape is attached to the die shoe. Next point. The blanking punch is secured. The blanking punch is secured to the punch holder. The blanking punch is secured to the punch holder. Next point. A spring stripper, a spring stripper strips the skeleton. A spring stripper strips the skeleton from the blanking punch. A spring stripper strips the skeleton from the blanking punch. Second last point. A knockout extending through the center opening. A knockout
extending through the center opening, a knockout extending through the center opening and through the punch stem and through the punch stem, STEM, stem. Stem पता है ना पेड़ का, that is called the stem. Punch stem मतलब उसका जो length है. Extending through the punch stem ejects the port out of the upstroke, ejects the port, P-O-R-T, port, on the upstroke, as it comes in contact, as it comes in contact with the knockout bar, as it comes in contact with the knockout bar on the press, as it comes in contact with the knockout bar on the press. Last point. In operation, comma, the blank holding ring, R-I-N-G, ring, the blank holding ring descends as the part is blanked. The blank holding ring descends as the part is blanked, comma, then the drawing punch contacts, and forces the blank into the drawing die, which is made in the blanking punch, blanking punch. Which is made in the blanking punch. All right, this is the answer for combination die. Acha, you want me to give you time to draw the diagram right now, or should I give you the other answer and then you can draw both the diagrams together? बाद में ड्रॉ कर लेंगे सर. बाद में ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. ये लास्ट वाला पॉइंट जरा रिपीट करेंगे. क्या बोल रहे हैं आप? लास्ट वाला पॉइंट. लास्ट वाला पॉइंट वापस बोलूं. In operation, comma, the blank holding ring descends as the part is blank, comma, then the drawing punch contacts and forces the blank into the drawing die, which is made in the blanking punch. हुआ? सर बोलिए. सेकंड लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस से बोल दीजिए. सेकंड वाला, सेकंड लास्ट. सेकंड लास्ट. हाँ. A knockout extending through the center opening. A knockout extending through the center opening
and through the punch stem ejects the port on the upstroke as it comes in contact with the knockout bar on the press. वापस बोल रहा हूँ, a knockout extending through the center opening and through the punch stem ejects the port on the upstroke as it comes in contact with the knockout bar on the press. अच्छा, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट किसी ने तो मुझे रिपीट करने बोला था, मैंने रिपीट किया, मगर क्या आपको मिला वो कि वापस रिपीट करना है मुझे? प्रियांश, हो गया बेटा लिख के? हेलो, ओके, एक दो वर्ड्स मिसिंग थे ना, तो वापस बोलूं लास्ट वाला? हो गया सर, हो गया, ठीक है, ठीक है. Alright, we will go on to the other die, that is progressive die, and after that you can आराम से sit and draw the diagram. Alright, the progressive die तो आपके सामने है, and I have already explained you this strip, that is in this diagram the strip is being basically entered or feeded from right to left. Alright, तो सबसे पहले हमारा piercing operation होगा, उसके बाद blanking operation होगा. But before starting with the explanation or the answer of progressive die, let me ask you कि यहाँ पे आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर why is it so that the dimension or the length of blanking and piercing punch यहाँ पे why is it varying, as in यहाँ पे you can see that there is a considerable amount of gap in the length, ये वाला ऐसा क्यों है? Why is it so? Anyone? ये गैप क्यों है? You are creating a washer out of these two punches. This is piercing operation, this is blanking operation. तो ये दोनों में लेंथ का डिफरेंस क्यों है? सेम क्यों नहीं हो सकते? सेम रखे तो क्या होगा, नहीं रखे तो क्या होगा? Yes, anyone? ट्राई तो करिए. सर एक बार में एक ऑपरेशन हो रहा है ना, इसलिए. हाँ, तो उससे फायदा क्या होगा बेटा? एक साथ दोनों के लिए लोड, बोलिए. सर दोनों की लेंथ अगर सेम रहेगी तो अपने को मतलब ज्यादा पावर लगेगा कटिंग के लिए. और कोई आंसर? सर एक साथ ज्यादा लोड आ जाएगा ना मशीन पे, क्योंकि दोनों एक साथ परफॉर्म हो एंड जाएंगे. ओएस, आई एम रियली हैप्पी विथ योर आंसर. सबसे बहुत सारे रीजन है, टू मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टैगरिंग ऑफ पंचेस. आंसर देखा था ना हमने पिछली बार, स्टैगरिंग ऑफ पंचेस में एफटी हमने कैलकुलेट किया था, टोटल फोर्सेस एफबी प्लस एफपी, याद है? यस यस सर. है ना? तो जब हमने स्टैगरिंग किया था, पंचेस को स्टैगर किया था, तो हमारा जो मैक्सिमम कटिंग फोर्स था वो ब्लैंकिंग था. यस. याद आया सबको? हाँ. है ना? तो अगर ये देखो, ये है पंच होल्डर. अब पंच होल्डर तो एक सिंपल कॉमन डिवाइस है, एक कॉमन डिवाइस है जिसके अंदर दो पंचेस इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे लोड आ रहा है इसके ऊपर, ये मोटर से, मतलब ये जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है उससे कनेक्टेड रहता है. अब कोई भी मशीन होने दो,
हाइड्रोलिक होने दो या हैंड ड्रिवन होने दो, वट एवर इट इज, वट एवर, वो पावर सोर्स को छोड़ दो, मगर पावर सोर्स का जो इनपुट है वो यहाँ पे इस सेक्शन में आता है, यहाँ पे। अब यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो अगर ये जो शीट मेटल है ये वाली, अगर ये 10 mm की शीट है और फॉर एग्जाम्पल हमको 12 टन का लोड लग रहा है उसको काटने के लिए, 12 टन का लोड, अगर दोनों सेक्शन एक साथ काटेंगे, दोनों सेक्शन एक साथ काटेंगे तो लोड दैट इज, बोलिए कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, तो जब दोनों सेक्शन एक साथ काटेंगे, द प्रॉब्लम इज द इनपुट फोर्स विल बी चेंज एंड दैट चेंज इज एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड फोर्स, ऑलराइट। तो मतलब हमको ये एफ टी लेना पड़ेगा, एफ टी मैक्सिमम कटिंग फोर्स के लिए, एफ टी दैट इज कटिंग फोर्स रिलेटेड टू ब्लैंकिंग एंड कटिंग फोर्स रिलेटेड टू पंचिंग को ऐड करना पड़ेगा, तब हमको एफ टी मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो पावर सोर्स लगेगा, यहाँ पे जो पावर लगेगा वो एफ टी लगेगा। मगर अगर हमने स्टैगर कर दिया, मतलब एक की लेंथ छोटी कर दी, एक की लेंथ बड़ी कर दी, तो हमको एफ टी की जगह हमको जो मैक्सिमम कटिंग फोर्स जिसमें लगने वाला है वो इनपुट पावर देना पड़ता है। मतलब एफ बी देंगे हम, ये वाला, ये सेक्शन को देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कटिंग फोर्स एक ऑक्यूपाई करने वाला है। ये एक बार काट देगा, उसके बाद ये एंटर होगा एंड ये काटेगा। अब ये समझा स्टैगरिंग, समझा? यस सर। ओके, अब इसके बाद एक और रीजन है। एक और रीजन क्या है कि हमने इसकी लेंथ छोटी करी है, बड़ी करी है, तो हमने ये पियर्सिंग की लेंथ बड़ी क्यों नहीं करी? इसको छोटा कर सकते थे। तो वो क्या रीजन है, वैसा वो ऐसा क्यों नहीं किया? लेंथ ही छोटी बड़ी करनी थी ना, तो हम ब्लैंकिंग पंच को छोटा कर देते और पियर्सिंग पंच को लंबा कर देते लेंथ में, वैसा क्यों नहीं किया? सर ये ब्लैंकिंग का फोर्स ज्यादा है तो पहले ये जाएगा और उसका ऐसा काम नहीं, है तो नहीं बाद नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला वो जाएगा नहीं, लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ की। लेंथ ब्लैंकिंग पंच की ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू पियर्सिंग पंच? why is it that we have not drawn this as more in length as compared to blanking? ये भी तो पहले जा सकता है। yes anyone? चलो let me give you an answer। अगर ये दो केसेस हैं हमारे पास, ये वाला पंच है पियर्सिंग पंच। अब ये जो पियर्सिंग पंच है, अगर ये वर्कपीस से इंटरैक्ट करेगा, वर्कपीस से इंटरैक्ट करेगा, इसके ऊपर 10 टन का या 12 टन का लोड आने वाला है। बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, डायमीटर तो सेम है, कौन सा पहले बेंड होगा? ब्रेकेज के चांसेस किसके ज्यादा हैं? बड़े वाले की। बड़े वाले के। तो देयर आर चांसेस कि क्योंकि इसका डायमीटर कम है, तो देयर मे बी सम डिस्टॉर्शन, देयर मे बी सम डिस्टॉर्शन इन द पंच, राइट। So in order to avoid this damage that is done to the punch, because ये छोटा मोटा फोर्स नहीं होता है, ये 12 टन का फोर्स होता है। मतलब देखो ना, अगर आपने ड्रिल बिट एक पर्टिकुलर लेंथ से ज्यादा की ड्रिल बिट ली और वो पतली ड्रिल बिट है, पतली वाली, मतलब अभी समझो 10 mm की है, राइट, और अपन ने इसकी लेंथ कुछ ज्यादा ही रख दी है, तो क्या होता है? ब्रेकेज होता यस सर बढ़िया। है ना, टूट जाती है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि अगर मैंने 12 टन का या 10 टन का या कभी कभी 150 टन फोर्स आ रहा है, 120 टन का फोर्स आ रहा है, तो वो दिस लेंथ विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड दैट फोर्स। इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट पियर्सिंग पंच का जो लेंथ है वो कैलकुलेटेड लेंथ है, एंड दैट हैज टू बी and that is recommended to be smaller than the
ब्लैंकिंग पंच, क्योंकि ये इसको काट दे उसके बाद ये एंटर होगा एंड देन इट विल कट. So there are two reasons. One is staggering of the punches in order to minimize the cutting force that is required to perform the operation, and the length matters. Alright, दोनों explanation समझा सबको? सबको समझा? Any doubt? फिर से एक बार बताओ तो। मतलब ये ब्लैंकिंग अगर खुदा ने हादसा टूट गया है तो ये पंच वाला बच जाना चाहिए, ऐसा? नहीं यार, ब्लैंकिंग का क्यों टूटेगा? मैं पंच की बात कर रहा हूँ. अगर ये पंच को लंबाई में ज्यादा कर दिए होते ब्लैंकिंग के कंपैरिजन में तो कर सकते थे ना, कोई रीजन तो नहीं था. मगर हमने क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर लेंथ डायमीटर कम है और लेंथ ज्यादा है तो वो बेंड होने के चांसेस रहते हैं ना, टूटने के चांसेस होते हैं. है कि नहीं अहमद? हाँ सर. और वही सर मैंने ये दोनों पंच के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका भी ये वाला डिस्टेंस. ये वाला हाँ हाँ. ये डिस्टेंस तो ये इट इज नॉट रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द पंच. ये इररिलेवेंट है. वो डिपेंड करता है आपके वर्क पीस के ऊपर. मतलब ये देखो कैसा होता है कि एक अगर एक स्ट्रिप है, ठीक है, अब मेरे को ये स्ट्रिप का लेआउट बनाना है और मेरे को स्ट्रिप में से वॉशर निकालने हैं, मैक्सिमम फोर्स मटेरियल यूज करना है. तो मैक्सिमम मटेरियल मुझे यूज करना है ना. समझे कि नहीं? हाँ सर. मैं इसके बीच में हाँ, रिलेशन नहीं है. ये जो दो ऑपरेशन हो रहा है ना, ब्लैंकिंग और पंचिंग का, ये स्ट्रिप लेआउट के ऊपर, स्ट्रिप लेआउट के जो डिस्टेंस है, मतलब स्ट्रिप लेआउट का जो ऑपरेशन है या डिस्टेंस है, डिजाइन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता, इट वेरीज. राइट? ओके ठीक. ये स्ट्रिप लेआउट का न्यूमेरिकल है. हम अभी आगे आएगा तब देखेंगे. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी बाकी हैं. मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके फिर न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल. ऑलराइट, तो प्रोग्रेसिव डाई का समझा आप लोग को? डिस्क्रिप्शन एंड आंसर. यस सर. Okay, now we will write it down and then I will give you time to draw the diagram and that will be all. Right now. Progressive die. A progressive die or follow on die has a series of stations. डायग्राम की जगह छोड़ देना तो डायग्राम की जगह छोड़िए, डायग्राम की जगह छोड़िए. A progressive die or follow on die, a progressive die or follow on die has a series of stations, has a series of stations. अब ये जो सीरीज ऑफ स्टेशंस है डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन कौन सा हो रहा है और जॉब का लेआउट कैसा है, मतलब स्ट्रिप का लेआउट कैसा है. वापस से बोल रहा हूँ, प्रोग्रेसिव डाई और फॉलो ऑन डाई हैज अ सीरीज ऑफ स्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट, एट ईच स्टेशन, at each station, comma, an operation is performed at each station, comma, an operation is performed, an operation is performed on a workpiece during a press stroke. An operation is performed on a workpiece during a press stroke. Next point, between the stroke, comma, the piece of metal strip, the piece in the metal strip
between the stroke, comma, the piece in the metal strip is transferred to the next station. The piece in the metal strip is transferred to the next station. Next point. A finished workpiece is made at each stroke of the press. A finished workpiece is made at each stroke of the press. Next point. When the piercing punch cuts a hole in the strip, when the piercing punch cuts a hole in the strip, comma, the blanking punch blanks out a portion. The blanking punch blanks out a portion of the metal in which a hole has been produced, in which a hole has been produced at a previous station, at a previous station. Last point. Hence, comma, after each stroke, after each stroke, a finished washer is produced. Hence, comma, after each stroke, a finished washer is produced. All right, that is all for progressive die. We have two more dies.